Hello students. Today in electricity I will discuss about the topics impact of potential difference on current, Ohm's law, resistivity, circuit and its type and related numericals. So previously I will tell you about impact of potential difference on electricity. So be ready. Of potential difference on electricity. Actually, if we talk about impact of potential difference on electricity, so I will tell you here that potential difference has a very great relation with electricity. Potential difference has direct relation with electricity. In a conductor, electricity cannot be supplied, electricity cannot pass as long as potential difference will not be applied at the ends of the conductor. Suppose ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी तब तक पास नहीं होगा जब तक कि कंडक्टर के टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से ऐड करना पड़ेगा। मींस फॉर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी conductor should be connected. Conductor should be added with electrical source like cell, battery or any AC source, alternate source. So here I will tell you, suppose it is a cell. It is a cell. I am using the symbol. Suppose it is a cell. Suppose it is a cell connected on the first term of the conductor and on second terminal of the conductor, suppose it is a bulb. In this situation you will see here, so in this condition you will see that bulb is bulb. As you know that bulb is a electrical instrument. Bulb is an electrical instrument, so it is also known as resistor. All electrical instruments are also can be said as resistor. तो जो रजिस्टर होती है उसकी वोल्टेज इक्वल टू 0 होता है। एक्सप्लेनेशन से पहले एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, इन ऑर्डिनरी सेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो नोन एज वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो नोन एज वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो नोन एज वोल्टेज। जो बल्ब रहती है, मतलब जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर का वोल्टेज ऑलवेज 0 होता है और जो सेल होती है, सेल की एक पार्टिकुलर वोल्टेज होती है। जैसे आपका पेंसिल सेल होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट का होता है। तो इन दिस सिचुएशन जब कंडक्टर के टर्मिनल पे कोई सेल या कोई बैटरी, ग्रुप ऑफ सेल इज आल्सो नोन एज बैटरी, कोई सेल या कोई बैटरी या कोई अल्टरनेट करंट सो इलेक्ट्रिक सोर्स ऐड करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो सेल होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिक सोर्स होता है, कोई सेल है, कोई बैटरी है या कोई ऐसी इलेक्ट्रिकल सोर्स है, तो दीज आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी सोर्स ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। तो जब कंडक्टर को किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से ऐड करते हैं तो कंडक्टर के जिस टर्मिनल पे वो सोर्स ऐड होता है वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई हो जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई इसलिए होता है कि जो इलेक्ट्रिक सोर्स होता है वो जिस टर्मिनल पे कनेक्ट होता है उस टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने लगता है। तो जिसकी वजह से जिस टर्मिनल से इलेक्ट्रिक सोर्स कनेक्ट है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक पोटेंसी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक पोटेंसी इंक्रीज। Electronic potential increase, we also can say that electron density increases. Electron density increases. और कंडक्टर के जिस टर्मिनल पे रजिस्टर कनेक्ट होता है मतलब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट होता है, यहाँ पे बल्ब कनेक्ट मतलब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो कंडक्टर के जिस टर्मिनल पे बल्ब कनेक्ट होता है या कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट होता है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक पोटेंसी निल होती है, जीरो होती है। इलेक्ट्रॉनिक पोटेंसी निल होती है। अदरवाइज सो ड्यू टू दिस सेट अपेंडेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। Electron density decreases. So it happens that from high density of electron to lower density of electron, an electrical pressure is applied. And electrical pressure is applied from high density of electron to lower density of electron, and by this way इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रॉन का सप्लाई शुरू हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई शुरू हो जाता है। सो इन दिस केस वी कैन से तो एक बार फिर से तो कंडक्टर के फर्स्ट टर्मिनल पे जहां पे इलेक्ट्रॉन पोटेंसी हाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और सेकेंड टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है, तो फ्रॉम हायर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लोअर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिकल प्रेशर इज अप्लाइड। सो इन दिस सिचुएशन आई विल टेक यू हियर दैट तो कंडक्टर का जो टर्मिनल इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट होता है वहां पे इलेक्ट्रिक सोर्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करने लगता है, तो जो टर्मिनल इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पोटेंसी बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन पोटेंसी हाई हो जाती है और दूसरे टर्मिनल पे जहां पे कोई रजिस्टर एडेड है, कोई बल्ब एडेड है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निल हो जाती है, जिसकी वजह से क्योंकि कोई बल्ब है, रजिस्टर, उसका वोल्टेज ऑलरेडी जीरो होता है। इस टर्मिनल पे जहां पे इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन पोटेंसी हाई हो जाती है। तो ये हाई इलेक्ट्रॉन पोटेंसी से लो इलेक्ट्रॉन पोटेंसी जो ये डिफरेंस आ जाता है, हाई इलेक्ट्रॉन पोटेंसी और लो इलेक्ट्रॉन पोटेंसी के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। सो द डिफरेंस बिटवीन high electron density and so the difference between high electron potency and low electron potency is called potential difference, and this potential difference is applied at the ends of conductor. That potential difference applied at the ends of the conductor that leads an electric pressure, that leads
and electric pressure that forces electricity to flow into conductor, and by this way electricity flows into conductor. So on this matter, now a written description. Here that you will see so on this matter यहाँ पे आपने now you are watching here कि जब एक टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई जाती है और दूसरे टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होती है या नील होती है, या फर्स्ट टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हाई हो जाती है और दूसरे टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नील हो जाती है, तो इन दिस सिचुएशन यही हाई इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और नील इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एंड नील इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. That this difference of electron potential between the terminals of the conductor, between the terminals of the conductor is called potential difference. Potential difference. This potential difference forces the electricity to flow into conductor. This potential difference forces electricity to flow into conductor. Flash of electricity, supply of electricity always takes place from high density of electron potential to low density of electron potential. Note, electricity supply always takes place. Electricity supply always takes place from high potential of electron to low potential of electron. To low potential of electron. Due to electron pressure, due to electric pressure applied and due to electric pressure applied due to potential difference. That's so it was the relation between electricity and potential difference. Means no potential difference, no electricity supplied to conductor takes place. Here I will tell you one more thing, more important thing, that is measurement of potential difference. Measurement of potential difference. Measurement of potential difference
measurement of potential difference is takes place due to an electrical instrument called voltmeter, denoted by B. Since voltmeter has a high resistance, voltmeter is connected into parallel circuit voltmeter is connected into parallel circuit that I will tell you later. Next, and second, at supply of electricity, measurement of electricity, takes place. Measurement of electricity takes place by an electrical instrument called ammeter, denoted by A. Ammeter is connected into series circuit. Ammeter is connected into series